Assalamualaikum dear viewers. आज पर lecture 5th of Quadratic Equations class 10th maths. As to purpose question number 5 of exercise 4.2. Question number 5 says the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. As to if the altitude of a right triangle is 7 cm less than its base, you saw altitude means perpendicular to right triangle. Look, such base is 7 cm come. The hypotenuse is 13 cm. As new right triangle is almost hypotenuse this side, use 90 is opposite is hypotenuse, longer side is hypotenuse 13 cm. Or I show altitude is base. You see altitude altitude is 7 cm come base nish. Tell guys base pata asim. As kya kotem khatra as to base to is x centimeter. One altitude base nish 7 cm come. Then we go altitude x minus 7. X as base go base nish 7 cm come. Let the base of a right triangle be x centimeter. Therefore, altitude is x minus 7. So you go 7 centimeter come base nish. Hypotenuse 13 centimeter. One karo after right triangle must karo use Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem. PGT. So hypotenuse square is base square plus altitude square. Hypotenuse square, that is hypotenuse is 13. So go to 13 square is equal to base square. Base is x. So go to x square plus altitude square, that is x minus 7 whole square. X minus 7 whole square. 13 square go barabar 169 is equal to x square. But through that x minus 7 whole square. So matlab a minus b whole square. A minus b whole square chasna barabar a square minus 2ab plus b square. A bandu choice x, b bandu 7. One lakh is a minus b whole square bandu a square. So go x square minus 2a bandu x, b bandu 7 plus b square, b bandu 7, that is 7 square. 169 lakho ite padam. X square plus x square go 2x square. But minus 2 into 7 basis with x. So go 2 into 7 go 14x. Plus 7 square, that is 49. 169 lekho ithe pade as such. Plus 49 tar one your minus 49. Yedi bacha was same side 2x square minus 14x. 169 is karo subtract 49 that is 120 is equal to yet karo is 2 common. Yes was 2x square il 2 karo common at x square minus was 14x il 2 karo common at 7x 2 into 7 go 14. 120 lekho as such the padan. You see 2 a common code as multiply it. Ya you guys divide 2 at batch as x square minus 7x. 1 karo divide him 2 1 are go 2 260 are go 120. 1 lakho see x square minus 7x tar on your x square plus agar minus x square. Yours minus 7x agar your plus 7x. It was already know the 60 locus plus 60. Yem side with the skin, that is 0. Even as quadratic equation in x variable. You can always factorize quadratic equation means you got middle term split ताकि तक near x value, that is basic value, the b near altitude value. Because x1 question find the other two sides. Hypotenuse date altitude kadun base kadun. One draw is this quadratic equation minus x square plus 7x plus 60 is equal to 0. Middle term split करने खातर अच्छी मसा end and पर term में आसान तमन चीज करना पाने product ये चीज minus x square ये चीज 60 minus and plus go minus x square into 60 go 60x square go अमन दोनों product द्रावस minus 60x square m पचास middle term so चीज 7x इस 7x चीज करने split into two parts. One करो से 7x split into two parts. अगर इस आख example got the more different थोड़ा ताकि ताही समझ बनी मैं 13x
अत कर सबट्रैक्ट 6x अगर 13x करो सबट्रैक्ट 6x तक रोज 7x आओ वापस प्रोडक्ट बराबर प्लस इंटू माइनस गो माइनस 13 इंटू 6 दैट इज 78 x इंटू x गो x स्क्वायर सो तेल माइनस 78 x स्क्वायर मगर ये बन गि माइनस 60 x स्क्वायर यह आव बराबर कहें इसलिए बदल पार्ट वन वन अगर बह निमन अमे बदल 12x स्क्वायर माइनस करो 12x क्या करो माइनस तब बन 7x अत करो सबट्रैक्ट 5x 12x अगर सबट्रैक्ट करो 5x तक रोज 7x गो ठीक वन प्रोडक्ट बराबर कि ना प्लस इंटू माइनस गो माइनस 12 इंटू 5 गो 60 x इंटू x गो x स्क्वायर आ प्रोडक्ट बराबर गो तेल मिडल टर्म ये 7x अमिक जो पार्ट यह स्प्लिट कोर दोन पार्ट्स मज सह 12x माइनस 5x तेल लिखो माइनस x स्क्वायर पन्ने जाए प्लस 7x अम बदल लिखो 12x माइनस 5x 12x माइनस 5x बे प्लस 60 ऑलरेडी इज इक्वल टू 0 वन दोन टर्म मज क्या नीर कॉमन इन मज कॉमन x कोड़ x कॉमन यह माइनस x स्क्वायर तेल रोज माइनस x x कोड़ कॉमन अत रोज माइनस x क्या प्लस इंटू माइनस गो माइनस x इंटू x गो x स्क्वायर आ बराबर वन 12x अम कोड़ x कॉमन अत बचाव 12 अतस नीर ब्रैकेटस मज सह ब्रैकेटस मज बेक लटि दैट इज माइनस x प्लस 12 मगर ये हर माइनस 5x प्लस 60 गोड़ जो टर्म पे जो टर्म ये बचे जो टर्म इन दोन टर्म मज आव फिलहाल चीज दैट इज माइनस x प्लस 12 वन माइनस एक्सस क्या करो मल्टीप्लाई सह बन माइनस 5x करो मल्टीप्लाई प्लस 5 वन करो चेक बराबर आवा ये प्लस इंटू माइनस गो माइनस 5 इंटू x गो 5x वन यह पाने बराबर आमुत तेल प्लस इंटू प्लस गो प्लस 5 इंटू 12 गो 60 आ बराबर ये वन इस माइनस x प्लस 12 कड़ो कॉमन दोनों जायन माइनस x प्लस 12 यह कोड़ कॉमन अत बचाव x प्लस 5 इंटू कर x प्लस 5 बराबर दोनों में 0 बराबर गो माइनस x प्लस 12 इंटू x प्लस 5 द्रा बराबर 0 तेल बराबर 0 तीत बराबर 0 दैट इज माइनस x प्लस 12 यह बराबर 0 एंड ब्याक दैट इज x प्लस 5 यह बराबर 0 माइनस x इथे बन प्लस 12 अगर योर तार वन यह बन माइनस 12 माइनस माइनस गैस कैंसल x द्राव वैल्यू 12 एंड ब्याक वैल्यू क्या द्राव x यह प्लस 5 अगर और तार वन यह बन माइनस 5 जो वैल्यू द्राव द्राव x 12 वैल्यू ब्याक द्राव x माइनस 5 वैल्यू मगर x थोमुत बेस बेसिकली बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल मगर इस बेस राइट ट्रायंगल सह नेगेटिव कहें तेल क्या लिखो x इज इक्वल टू माइनस 5 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बेस कैन नॉट बी नेगेटिव अत कुछ वैल्यू बचा तेल अत बचाव 12 तक मतलब गो यह बेस राइट ट्रायंगल x थो सह द्राव 12 सेंटीमीटर और वन आल्टीट्यूड बेस नश 7 सेंटीमीटर कम तेल आल्टीट्यूड कोता नीर आल्टीट्यूड थो बराबर x माइनस 7 x बदलाव 12 माइनस करो 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर गो आल्टीट्यूड द्राव 5 सेंटीमीटर तो बेस द्राव 12 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज दित 13 सेंटीमीटर वन लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 ये क्वेश्चन वन a cottage industry produces certain number of poultry articles in a day cottage industry बनावान कि articles कि number of articles अकिस दोहस मज cottage industry मतलब गो small scale industry लकड़ मकड़ industry इस घर ते सेटअप करान it was observed on a particular day एक खास दो यह वुचन यह चेक कर ऑब्जर्व करना that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day एक दो ऑब्जर्व करना यह मसा यह cost of one article अकिस articles अकिस चीज़ कीमत सह 3 more than twice the number of articles means जितना article बने तम के दोगुन 3 ज्यादा
if the total cost of production on that day was rupees 90, अगर तमे दो चेक करो ये तमे दो total cost of production was 90 rupees. अस find the number of articles produced, कत्या article produce करन तमे दो, and cost of each article, प्रत कुन articles प्रत कुन चीजस कोता कीमत ओस. अगर इस number of articles थावक x, for example number of articles थावक x, वन चेस और बनान अम पत cost of each article हसा और दित सो 3 more than twice the number of articles. ये आर्टिकल तम कि दोगुन नश 3 ज्यादा. आर्टिकल कस x, अमुक दोगुन क्या गो 2x, 3 ज्यादा मतलब क्या गो +3. या 3 more than twice the number of articles. दपन यह cost of one article. यह cost x articles. Number of articles x, cost of one article draw as 2x plus 3. क्या बस. Let the number of articles produced in a day is equal to or be x. Cost of one article draw as 2x plus 3. और total cost of production on that day has rupees 90. और given total cost of production on that day is rupees 90. अगर यह पता कत्या चीज एक चीज कोता कीमत तेल हेको आराम सान टोटल कॉस्ट कर. फॉर एग्जांपल अगर तुम मार्केट मज अनिव 5 पेन्स, 5 पेन्स मतलब गो तुम नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता, यह गो नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5 पेन्स. अगर तो कॉस्ट ऑफ वन पेन कॉस्ट ऑफ वन पेन रुपीज 7 गो अस चीज पता पता कस पेन अन कस आर्टिकल अन बे अकिस पेनस कोता कीमत मीनस अकिस आर्टिकलस कोता कीमत तेल हेको आराम सान टोटल कॉस्ट कड़. टोटल कॉस्ट कित हेको कड़. टोटल कॉस्ट कोता वो 5 पेनन सह गो 5 into 7 सह गो 35. गो टोटल कॉस्ट द्राव 5 into 7 is equal to 35. 5 क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 7 क्या कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. गो अमुक मतलब गो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बराबर आसान नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. अशोर दित टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रुपीज 90 तेल टोटल कॉस्ट बदल लिखित हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई करो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल. तेल नंबर ऑफ आर्टिकल्स अम बदल मल्टीप्लाई करो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल सो और दित 90 rupees. वन नंबर ऑफ आर्टिकल्स कत्या वन लिख let the number of articles be x. गो number of articles x. अत करो मल्टीप्लाई cost of one article लिखित cost of one article is equal to x plus 3 2x plus 3 सो और दिस रुपीज 90. वन लिखो x into 2x that is equal multiply सो गो 2x square. x into 2x that is 2x square plus x into 3 that is 3x. ये 90 तार वन योर बन -90 is equal to 0. ये बने quadratic equation in x variable. वन करो फैक्टराइज अत करो मिडल टर्म स्प्लिट. मिडल टर्म स्प्लिट करने खतर एंडन पे टर्म तम पान प्रोडक्ट करान प्लस इंटू माइनस गो -2x स्क्वायर इंटू 90 दैट इज 180x स्क्वायर. यह द्राव यमन दोन टर्मन हुंद प्रोडक्ट. वन मिडल टर्म सो 3x. यह करो स्प्लिट इंटू 2 पार्ट्स. तमें कर स्प्लिट इंटू 2 पार्ट्स कि तिहुंद प्रोडक्ट गि बराबर -180x स्क्वायर बे गो वापस बनाउन 3x. अगर लिखो 15x -12x 15x सब्ट्रैक्ट कर 12x तत रोज 3x आव वापस टर्म 3x आव वापस. तो वन वो प्रोडक्ट बराबर -180x स्क्वायर कि ना. 15 प्लस इंटू माइनस गो माइनस गो साइन चेक 15 into 12 that is 180 x into x that is x square गो प्रोडक्ट तक बराबर लिखो 2x स्क्वायर बदल 2x स्क्वायर ये 3x बदल लिखो 15x माइनस 12x प्लस 15x माइनस 12x बे -90 is equal to 0. वन दोन मज क्या दोन टर्म मज क्या कॉमन ये x x कोड कॉमन अत बचा 2 बे x क्या बचा ब्या x प्लस यह 15x x द्राव कॉमन अत रोज 15 वो ब्रैकेट्स में लिख ये लिखुन आसान दैट इज 2x प्लस 15 मगर ये तो हर कन बेज टर्म यह दैट इज -12x ब्या -90 वन 2x क्या करो मल्टीप्लाई 2x क्या करो मल्टीप्लाई बन -12x सह गो -6
माइनस इंटू प्लस गो माइनस 6 इंटू 2x गो 12x माइनस इंटू प्लस गो माइनस 6 इंटू 15 गो 90 आ बराबर वन करो यह 2x प्लस 15 यह दोन जायन यह कड़ो कॉमन 2x प्लस 15 कोड कॉमन अत क्या बचा अत बचा x माइनस 6 इंटू x माइनस 6 यह बराबर 0 यह बराबर 0 तेल यह बराबर 0 लिखो अलग अलग दैट इज 2x प्लस 15 तह बराबर 0 एंड x माइनस 6 तह बराबर 0 वो लिखो 2x पन्ने जाए यह प्लस 15 तार योर बन माइनस 15 एंड ब्याक x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 x पन्ने जाए माइनस 6 तार होर बन प्लस 6 द्राव अख वैल्यू एक्सस वो लिख x पन्ने जाए माइनस 15 पन्ने जाए यह 2 मल्टीप्लाई गई डिवाइड द्राव ब्याक वैल्यू एक्सस मगर अख वैल्यू द्राव नेगेटिव ब्याक द्राव पॉजिटिव x थोम नंबर ऑफ आर्टिकल्स हेक नेगेटिव इसलिए यह वैल्यू कैंसिल दैट इज माइनस 15 अपॉन 2 कैंसिल अत बचाव ब्याक वैल्यू दैट इज x इक्वल टू 6 तमें मतलब गो नंबर ऑफ आर्टिकल्स थोमुत x सह द्राव तेल 6 तेल लिखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड यम इंडस्ट्री बन तम थमित x तम द्राय बराबर 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मीन्स कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल सह यह आर्टिकल तम कि दोगुन नश 3 ज्यादा आर्टिकल 6 तमिक दोगुन गो 12 प्लस 3 3 ज्यादा मतलब गो प्लस 3 12 प्लस 3 गो 15 तेल तो वन मगर अस पे लिखमुत सह लिखो लिखमुत कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3 यह लिखो 2x प्लस 3 2 पन्ने जाए x बदल लिखन इस द्राव वैल्यू दैट इज 6 प्लस 3 वन करो चेक यह द्राव 2 into 6 that is 12 plus 3 that is 15 तमें मतलब गो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल द्राव 15 वन करो चेक यह सही कि गलत चेक कर पता टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 अच्छी पता टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर नंबर ऑफ आर्टिकल्स द्राव 6 अच मल्टीप्लाई कर कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल द्राव 15 सह ग चेकस मज सह ग 90 6 into 15 that is equal to 90 गो चेक तह सही